हे यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में हम लोग वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बोला था कि इस हफ्ते में 3 वीडियो डालने वाला हूँ। तो पहली वीडियो थी अराउंड पावर बीआई, दूसरी वीडियो हमने डाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और तीसरी वीडियो ये है वेब टेक्नोलॉजीज पे। तो आइए शुरू करते हैं। So we'll be exploring HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, MongoDB, Node.js, and Express.js. Let's start. What we will be discussing in this video? First of all, we'll be understanding front-end, which will include HTML, CSS, and JavaScript. Then we will discuss backend, which is Node.js, Express.js, MongoDB, and MySQL in the scope of this video. Then we will see the front-end backend interaction, and then we'll come to the conclusion of the video. So coming to the introduction, have you ever wondered how websites work behind the scenes? Or maybe you are interested in building your own website from scratch. Either way, we have to understand front-end and back-end web development because it plays a crucial role for anyone who is looking to create or maintain websites. In this presentation, we'll be covering everything that we need to know about these two aspects of web development. First of all, talking about the front end. Front end can be broadly divided into three parts, which is namely HTML, CSS, and JavaScript. We can take HTML as the skeleton of the web page front development. Then CSS is the skin, and JavaScript is the brain or the nervous system. So the importance of front-end development cannot be overstated. A well-designed and user-friendly website can make all the difference in attracting and retaining customers. For example, if there's an online store with a clear and easy-to-use interface, it is more likely to convert visitors into paying customers than a poorly designed website with confusing navigation. HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard markup language used to create web pages. The basic structure of HTML document consists of a series of tags that defines the content and layout of a web page. These tags are enclosed in angle brackets and can be nested within each other to create complex structures. CSS is a cascading style sheet and is a style sheet language used to describe the presentation of a document which is written in HTML. CSS allows the developer to separate content from presentation, making it easier to maintain and update the web pages. With CSS, one can change the look and feel of a website by modifying the style applied to the HTML elements such as font, color, margin, layout, and so on and so forth. JavaScript. JavaScript is a programming language which is widely used to add interactivity and functionality to web pages, like adding validations, putting on some logic behind the text when you are clicking on the button, what will happen. That all thing is written in the backend. From the backend, that happens, it's triggered by JavaScript. It is a client-side scripting language, which means that it runs on the user's computer rather than on the server. JavaScript can be used to create dynamic effect on web pages, such as pop-up window, drop-down menu, and animations. It can also be used to validate forms and perform calculation. In short, JavaScript is an essential tool for creating engaging and interactive web pages. Backend. Backend development refers to the server side of web development. Means whatever is not happening on the client's machine, but it's as crucial as the front-end development or the things that are happening in the client machine to make the things happen. So, while front-end development focuses on a user interface and experience, backend development is more responsible for making sure everything runs smoothly behind the scenes. Taking an example of important backend development, e-commerce website. When a customer makes a purchase, their payment information needs to be securely processed and stored. This requires a well-designed backend system
that can handle sensitive data and ensure transactions are completed smoothly. Without proper backend development, an e-commerce site could be vulnerable to security breach or other issues. Node.js. Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine designed to build scalable and efficient web applications. Node.js allows developers to use JavaScript on the server side, which means that they can use the same language for both front-end and back-end development. This makes it easier for developers to switch between different parts of web application and reduce the time needed to learn new languages. Then Express.js. It is a popular Node.js web application framework that simplifies the process of building scalable and efficient web application and APIs. When we talk about an API is, you can take it as a function which we call from the code that we write, and at the backend there is some functionality that is happening and it gives some output. So Express.js provides a wide range of features including routing, middleware support, templating engines, making it easier for developers to create robust and maintainable web applications. MongoDB. MongoDB is a popular NoSQL database used in backend development to store and retrieve data in web application. Unlike traditional relational databases, MongoDB uses a document-based model that allows for flexible and scalable data storage. This makes it ideal for handling large amounts of unstructured data such as social media posts or user-generated content. MySQL. MySQL is a popular open-source relational database management system that plays a crucial role in backend development. It is used to store and retrieve the data in web application, make it an essential component of any web-based software. One of the key advantages of MySQL is its scalability and flexibility. It can handle large amount of data and can be easily integrated with other technologies, making it a popular choice for web developers. Additionally, MySQL is known for its reliability and security features, ensuring that data is stored and accessed safely. Front-end and back-end interaction. In web development, the front-end and back-end are two distinct parts of a web application that work together to create a seamless user experience. The front-end is responsible for what user sees and interacts with, while the back-end handles the behind-the-scenes logic and stores data. When a user interacts with the front end of an application, such as by clicking a button or filling out a form, that interaction triggers a request to the backend. The backend then processes that request and retrieves any necessary data from the database and sends a response back to the front end or the user. This process happens quickly and seamlessly, allowing the user to interact with the web application in the real time. So if we conclude this, we have learned that importance of front-end and back-end development in web development. Front-end development is responsible for creating the user interface and experience, while the back-end development handles the server-side functionality and data storage. Both are equally important and work together to create a seamless web application. We also discussed some of the key technologies used both in front-end and back-end, such as HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js, MongoDB, and MySQL. But there are so much more apart from this. Even Python can be used. Then there are a lot of more frameworks that can be used, like CSS we can use. We can use Bootstrap, which is a CSS library. Then we can use PHP or PHP-MyAdmin, which is also used widely. By understanding these technologies and their roles in web development, we can build efficient and scalable web applications that meet the needs of our users. In today's digital age, having a strong web presence is crucial for businesses and individuals alike. By mastering both front-end and back-end development, we can create engaging
and functional web application that stand out from the competition. So this ends the video, but I'll give a 2 minutes overview in Hindi for my audience who want to understand in Hindi. So let's start. फ्रंट एंड के अंदर आता है आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. बैक एंड के अंदर आता है नोड जेएस, एक्सप्रेस डॉट जेएस, मोंगोडीबी, माई सीक्वल. इसके अलावा पाइथन भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. PHP माई एडमिन भी है जो हम यूज़ करते हैं. फिर फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन. फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में मेजरली 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको. HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में. एंगुलर वगैरह भी यूज़ होता है, बट अभी हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कंसिडरिंग कि मेरी जो ऑडियंस है उसको कुछ भी नहीं आता है टेक्नोलॉजी के बारे में. मैंने ये कंसिडर करके स्टार्ट किया है. तो HTML जो आपका है, HTML इज़ अ बेसिकली अ मार्कअप लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML डॉक्यूमेंट का होता है, उसके अंदर एक सीरीज ऑफ टैग्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं लेआउट को उस वेब पेज के. जैसे कि हम फॉर्म बना सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, हम बटन बना सकते हैं. हम इस तरीके से बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, हेडर्स डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर सोर्सेज दे सकते हैं स्क्रिप्ट के या URLs के. ये सारी चीज़ें हम HTML को यूज़ करके कर सकते हैं. CSS को ऐसा समझिए कि CSS इज़ लाइक फॉर डिज़ाइनिंग. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आप ये वाली फ़ोटो देखिए. इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSS को मैंने एज अ स्किन डिफाइन किया है, राइट. तो CSS को स्किन इसलिए डिफाइन किया है कि CSS के अंदर क्या हो रहा है कि वो ये बता रहा है कि डिज़ाइन कैसा है किसी भी चीज़ का. अब जैसे मान लीजिए कोई बटन है, उसका हम लोग उसको कलर क्या देना है, क्या वो मार्जिन कैसा रहेगा, उसका पैडिंग कैसा रहेगा, उसके ऊपर होवर करेंगे, उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो क्या रिएक्ट करेगा, वो कलर चेंज कर देंगे उसका कर्सर ले जाने पे, या सो एंड सो. इस तरीके से और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग इसको यूज़ करके बेसिकली जो वो कोडिंग करते हैं जो क्लाइंट की मशीन पे रहती है. फॉर एग्जांपल, अब हमें कोई फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगाना है कि जो ईमेल है उसके अंदर ये स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, हम वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं. फिर हमें कुछ ऐसे वैलिडेशंस लगाने हैं कि ड्रॉप डाउन विंडो आ जाए, पॉपअप विंडो आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके. और वो सारी चीज़ें हम क्लाइंट के मशीन पे ही कर सकते हैं बिना सर्वर को रीच आउट करे यूजिंग जावास्क्रिप्ट. बैकएंड के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि हम लोग पीछे से डेटा ले आके फ्रंट एंड में यूज़र को दिखाते हैं. और ये बहुत ही सीमलेसली और बहुत ही ऐसे तरीके से होता है कि यूज़र को पता ही नहीं पड़ता है. फॉर एग्जांपल, जब हम किसी ई-कॉमर्स साइट पे स्क्रॉल करते हैं और कुछ भी डेटा कार्ट में ऐड करते हैं, तो बैकएंड पे भी वो चीज़ें ऐड हो रही हैं, या फिर बैकएंड से वो फेच करके डेटा हमें दिखा रहा है, पर वो सीमलेसली हमें एक्सपीरियंस दे रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, राइट. Node.js जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है, जिससे कि हम लोग स्केलेबल और एफिशिएंट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. Node.js अलाउ करता है यूज़र को कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे यूज़ किया जा सके, जिससे कि लैंग्वेज जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में यूज़ कर सके. ये ईजियर ये आसान बना देता है डेवलपर्स के लिए स्विच करना डिफरेंट पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन में, और बहुत ही कम टाइम में कर पाते हैं उस चीज़ को. सो इट मेक इट मोर इफेक्टिव. Express.js एक Node.js का ही पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस को बिल्ड करने के और स्केल करने के वेब एप्लीकेशन को. ये एक वाइड रेंज ऑफ फीचर वगैरह प्रोवाइड करता है जिससे कि काफ़ी आसान हो जाता है. MongoDB एक पॉपुलर NoSQL का डेटाबेस है जिसको यूज़ करके कि बैक एंड डेवलपमेंट ईजी हो जाती है, जिसमें कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा बहुत ईजिली. इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, या फिर यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गए, या फिर सो एंड सो फोर्थ. MySQL जो है एक ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस है. ओपन सोर्स मतलब इट इज़ अ फ्रीली अवेलेबल डेटाबेस जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैकएंड पे डेटा कनेक्ट करने के लिए. इसका की एडवांटेज ये है कि ये स्केलेबल बहुत है और फ्लेक्सिबल बहुत है. और क्योंकि इसके अंदर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग कितना भी स्पेस यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे उस मशीन पे उतना स्पेस है जिस पे हम लोग ये इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. एडिशनली ये बहुत रिलायबल भी है और इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिससे कि ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो सिर्फ
फोर्सिंग वही बंदे एक्सेस कर पाए जिनको कि एक्सेस है उस चीज़ का, और कोई ब्रीच ना हो। अगर हम फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि फ्रंट एंड पे यूज़र को सिर्फ फ्रंट एंड दिख रहा होता है, यूआई जिसके अंदर होता है, और मेजरली जो वैलिडेशंस लगाए हैं, और बैक एंड पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक्शंस हो रहे होते हैं जो कि उसका वो एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर कुछ इस तरीके से है कि बैकएंड जो है वो ऐसा मैजिक है जो काम करता है डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा रिट्रीवल के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, और फ्रंट एंड जो है मेन वो चीज़ें हैं जो यूज़र को दिख रही होती है और जिससे उसका एक्सपीरियंस मोस्टली रिलेट होता है। कंक्लूड अगर हम करें इन चीज़ों को, तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और किसी भी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए और आज के डिजिटल एज में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखने के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर कोई बंदा मास्टरी प्रोवाइड कर लेता है, विच इज़ नोन एज फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है मार्केट में अभी, और डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स ऑन टॉप ऑफ दिस, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Hey, thank you for watching the video till end. Please like, share and subscribe to motivate me to post more such videos. आप लोग अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं आगे की वीडियोस किस सब्जेक्ट पे डालूँ, या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे टैग कर सकते हैं इस हैंडल को यूज़ करके, जो कि @नील मिश्रा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।